Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have started a topic of fluid kinematics, and we have discussed the involvement of energy and the flowing fluid. We have derived the Bernoulli equation for ideal fluid. Now, in today's lecture, we will derive the equation. We will modify the equation for the real fluids, and then we will then related numerical, and then we will discuss the practical application of Bernoulli's theorem in real life. So let's start with the equation for steady motion of real fluid along a streamline. You can see this figure. In this lecture, we will derive the equation for real fluid following the same procedure as in the previous section, except that now we shall consider a real fluid. In this figure, you can see there is a slight difference of this shear stress. You have seen this figure previously when we have derived the Bernoulli equation for ideal fluid. This is the same figure where PA is the force acting on this direction, and P plus dP and A plus dA is the force acting in this direction. We have already discussed the factors area, velocity and pressure, and A plus delta A. Then V plus delta V and P plus delta P on this direction. Here capital P is wetted perimeter on this side, and P plus dP is wetted perimeter on this side, where the distance between the two section is delta S, and this is the elevation Z and Z plus delta Z, and this is weight component acting downward, and we have taken its component in the flow direction. So the only difference from the previous figure and in this figure is this shear stress, which is acting along the boundary. Because in ideal fluid there is no viscosity, there are no shear stresses, but in real fluid viscosity exists, and hence the shear stresses exist on the perimeter. So the real fluid in a stream tube depicted in figure is similar to that of previous ideal fluid figure, except that now with the real fluid there is an additional force acting because of fluid friction. This additional force is tau into P plus half dP into delta S, where tau is shear stress at the boundary of the element, and P plus half dP into delta S is area over which the shear stress acts, P being the perimeter of the end area A, which may have any shape. So this there is a new force which we will consider while solving the equation for real fluid along a streamline. So we will follow the same procedure of writing the equation according to Newton's second law, and summation F equals to ma. We will write all the forces and then integrate and neglect the higher order terms. As we have done in the case of ideal fluid, same procedure will be adopted, and in the end we will get for an incompressible fluid the following equation: P2 over gamma minus P1 over gamma plus Z2 minus Z1 plus V2 square over 2G minus V1 square over 2G equals minus tau PL over gamma A. Or if we can arrange the equation like this, P1 over gamma plus Z1 plus V1 square over 2G minus tau PL over gamma A equals P2 over gamma plus Z2 plus V2 square over 2G. So if we compare this equation with Bernoulli equation for ideal fluid, we can see that the only difference is this additional term minus tau PL over gamma A, which represents the loss of energy per unit weight due to fluid friction between points 1 and 2. The dimensions of this energy loss term are length only, which agrees with all other terms in this equation, and so this is a form of head. This whole term tau PL over gamma A is a form of head. So the friction causing this loss of energy occurs over the boundary or surface of the element of area PL,
When as occurs often, we consider the stream tube to fill the conduit pipe or duct conveying the fluid. PL becomes the inside surface area of the conduit wall, and tau becomes the shear stress at the wall, tau naught. Then we can call this energy loss term the wall friction head loss. ये जो अभी हमने टर्म फार्मूला में पढ़ी थी, टॉ पी एल ओवर गैमा ए, क्योंकि शेयर स्ट्रेस जो है वो बाउंड्री पे एक्ट कर रहा है, वॉल पे एक्ट कर रहा है, इसलिए टॉ को हम टॉ नॉट लिख सकते हैं, टॉ नॉट पी एल ओवर गैमा ए। और ये टर्म जैसे हमने कहा ये हेड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हेड किस वजह से, फ्रिक्शन हेड लॉस की वजह से, इसलिए हम इसको एच एफ से डिनोट कर रहे हैं। सो एच एफ इक्वल्स टॉ नॉट पी एल ओवर गैमा ए। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं पी वन ओवर गैमा प्लस जेड वन प्लस पी वन स्क्वायर ओवर टू जी माइनस एच एफ इक्वल्स पी टू ओवर गैमा प्लस जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर ओवर टू जी। If, as is most common, the conduit of a circular pipe of diameter d, then P over A. What is P? P is wetted perimeter. Wetted perimeter means the sides which can be wet by the fluid. So if the circular pipe is completely full, then all its sides will be wet and its wetted perimeter will be pi d. So putting the values of wetted perimeter as pi d and area of circular pipe as pi d squared by 4, we get the answer equals to 4 by d. Then our equation number this 5.13 becomes HF equals 4 tau naught L over gamma d. This particular equation is for only for circular pipe. If you have any other shape, then you will use this equation. HF equals tau naught PL over gamma A. If circular shape is specified, then you can easily replace that equation with this one. 4 tau naught L over gamma d is the head loss. Now we will solve a related numerical. So the statement is, water flows through a 150 feet long 9-inch diameter pipe at 3.8 Q6. At the entry point, the pressure is 30 psi. At the exit point, 15 feet higher than the entry point, the pressure is 20 psi. Between these 2 points, find the pipe friction head loss, the wall shear stress, and the friction force on the pipe. आपके सामने फिगर शो हो रही है। इसमें आपके पास ये एक पाइप है जिसकी लेंथ है 150 फीट और डाया है 9 इंच। डाया इज सेम थ्रू आउट। इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और उसमें फ्लो का जो रेट है वो है 3.8 Q6। जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पे आपको प्रेशर बता दिया है 30 psi और एग्जिट पे प्रेशर है 20 psi। साथ में आपको एक और कंडीशन गिवन है कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, एलिवेशन डिफरेंस है, वो है 15 फीट। फाइंड आउट आपने क्या करना है, पाइप फ्रिक्शन हेड लॉस फाइंड करनी है, वॉल शियर स्ट्रेस फाइंड करनी है एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द पाइप फाइंड करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे फॉर रियल फ्लूइड, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि निगलेक्ट हेड लॉस एक्सेट्रा, बल्कि आपसे हेड लॉस पूछा गया है। दिस मीन्स कि आपने रियल फ्लूइड की इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो आप इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव की है। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, इसमें आपने HF फाइंड आउट करना है। सो HF के लिए आपने इक्वेशन यूज की P1 ओवर गैमा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G माइनस P2 ओवर गैमा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G। क्योंकि डिस्चार्ज सेम था और पाइप का डाया भी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों एंड्स पे वेलोसिटी सेम होंगी, इसलिए ये आपके जो टर्म्स हैं वेलोसिटी की टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आपका FPS सिस्टम है, इसलिए आपने गैमा की वैल्यू FPS सिस्टम में ली है 62.4 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, और प्रेशर आपको PSI में गिवन था, तो यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए आपने 144 से इसको मल्टीप्लाई किया है ताकि ये पाउंड पर स्क्वायर फीट में वैल्यू आ जाए। सो दिस इज वैल्यू ऑफ P ओवर गैमा। एलिवेशन अगर आप 1 पॉइंट को डेटम कंसिडर कर रहे हैं तो एलिवेशन 1 पॉइंट पे 0 और सेकेंड पॉइंट उससे हायर था, इसलिए प्लस 15 उसकी एलिवेशन है। सो इसमें सारी वैल्यूज नोन है।
Upon computing, you can easily get head loss equals to 8.08 feet. नेक्स्ट टर्म आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है द वॉल shear stress. सो वॉल shear stress आपने जब फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप इक्वेशन 5.13 या इक्वेशन 5.15 में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. क्योंकि सर्कुलर पाइप है, क्लियरली मेंशन है, इसलिए आप 5.15 इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. एच एफ इक्वल्स 4 टॉ नॉट एल ओवर गैमा डी. एच एफ आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, आपने सिर्फ टॉ नॉट फाइंड आउट करना है. सो एच एफ गैमा डी ओवर 4L. सो टॉ नॉट इज इक्वल्स टू 0.63 pound per square feet. The last thing which you were asked to find out was the friction force on the pipe. To find out the friction force, we will use stress multiplied by area. Area in this case will be wetted perimeter multiplied by length. So shear stress is 0.63, wetted perimeter is pi d, and length is L. So upon entering the values, we get friction force equals to 223 pounds. Now you can solve related numericals, and now we will discuss the practical applications of Bernoulli's theorem.